Hello students, today we will study about tangent and normal. This is very important topic which will be studied in the class 12. हम लोग का ये टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल. ये सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इन दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसके लिए देखिए टेंजेंट क्या होता है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द टेंजेंट. तो टेंजेंट इज द लाइन, टेंजेंट इज द लाइन which touches any curve at any point. So this is the definition of tangent. So tangent is the line which touches the curve at any point. This is called tangent. जैसे for example, this is any curve and this is the line which touches the curve at any point. Let's say coordinate of that point is x1, y1, and this line is called tangent. It means tangent क्या होता है? Tangent एक line होता है. Tangent एक line होता है which touches the curve, any curve. So we can take the equation of this curve y is equal to fx. This is the equation of the curve y is equal to fx, and this is the tangent. तो सपोज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो हमें मालूम है कि लाइन की इक्वेशन के लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए और लाइन पर एक पॉइंट पता होना चाहिए. तो यहाँ पर हमें पॉइंट तो मालूम है, बिकॉज दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ. दिस पॉइंट एग्जिस्ट ऑन कर्व एज वेल एज on tangent. So this point is common, so we know the point, but we have to find the slope. तो मेन बेसिक कंसेप्ट है कि किस तरीके से हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है. तो देखिए स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है y is equal to fx. So we have to differentiate the curve. तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया dy over dx. We know all the formulas of the differentiation. Through those formulas we can differentiate this function. So इसको हमने differentiate कर दिया and differentiation का notation होता है dash. So f dash x. This is the function after differentiation. F dash x. But we have to find. This is the general slope. This is the general slope of the tangent. But we have to find the slope of the tangent at x1, y1. So we have to put the value of x1, y1. So this is the slope at x1, y1. So we can represent it with symbol m. So m, this is the notation for the slope. So this जो वैल्यू होगी वो हमारी स्लोप का आंसर होगा. तो जब हमें स्लोप भी मिल गया, हमें पॉइंट भी मिल चुका है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से with the help of the slope point form of the line that will tell y minus y1 f dash x. This is the m. F dash x at x1, y1, x minus x1. So this will give you the equation of tangent. ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y होगा जो कि टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. अब सपोज हम लोग एक स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कर्व इज y is equal to sin x. Suppose we are taking the example of curve sin x. And we have to find the equation of tangent at x is equal to pi by 6. At x is equal to pi by 6 पर हमें इस tangent की इक्वेशन निकालनी है. कर्व हमें क्या दे रखा है, y is equal to sin x. तो हमें पॉइंट पहले पता होना चाहिए. तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, pi by 6 हम इसमें पुट कर देंगे. तो y हमें कितना मिल रहा है, sin of pi by 6, that is 1 by 2. So coordinate of this point pi by 6 comma 1 by 2. Coordinate of this point is pi by 6 comma 1 by 2. It means this is x1, y1. Pi by 6 is the x1 and y1 is 1 by 2. So now we have to differentiate it to
to find the slope of the tangent. So y is equal to sin x. This is the equation of curve, and we have to differentiate dy over dx is equal to cos x, and we have to put the value of x is equal to pi by 6 to get the slope at any particular point. So dy over dx at x is equal to pi by 6, that will be equal to cos of pi by 6. This is root 3 by 2. cos 30 की वैल्यू हमारी root 3 by 2 होती है, तो हमारा जो स्लोप आ गया that is root 3 by 2. This is the value of the slope. cos pi by 6, that is the value of slope root 3 by 2. Now we have to write the equation of the tangent. We know the slope root 3 by 2 and we know the point pi by 6 comma 1 by 2. So we can easily write the equation of tangent with the slope point form of the line. So that will be y minus y1, that is half. Y minus y1, that is 1 by 2, and slope is root 3 by 2. Slope is root 3 by 2 and x coordinate is pi by 6. X coordinate is pi by 6. So that is x1. So this is the equation of tangent at pi by 6 comma half to the curve sin x. Y is equal to sin x. So we can find the normal also in this situation. This is the normal. तो normal क्या होता है? First of all we should know about the normal. तो normal is the line which is perpendicular to the tangent, passing through point of contact. So this is the normal. What's the definition of normal? Normal is the line which is perpendicular to tangent and passing through the point of contact. So here we can find the slope of normal also. हम लोग जानते हैं दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है. तो सपोज हमें यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है तो हम लोग नॉर्मल का स्लोप भी लिख सकते हैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट विल बी -1 upon root 3 by 2, that will be -2 upon root 3. This is the slope of normal. तो easily आपको यदि कोई लाइन दे रखी है आप उसके स्लोप का रेसिप्रोकल ले लो और साइन चेंज कर दो. That will give you the slope of the perpendicular line. So slope of the normal. So हमें अब यहाँ पर slope of the normal भी मिल चुका है और हमें normal पर एक पॉइंट भी मालूम है pi by 6 comma 1 by 2. So we can write the equation of normal also. तो y minus 1 by 2 is equal to -2 by root 3 x minus pi by 6. That will give you the equation of normal. So बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया? This is the very small concept. This is very basic concept in the beginning of this chapter.